Bill of lading. Do you have any idea about what is bill of lading? Bill of lading is defined under Section 2, subsection 4 of the Indian Stamp Act 1899. And before we go and read the provision, Section 2, subsection 4, there are some terms which we have to be very clear with. Okay? हम कुछ terms को समझेंगे जो कि shipment world में use होती है. You know, when you are shipping the goods, उनमें जो है ये words use होते हैं. हम पहले उन words को समझते हैं. सबसे पहला term is the shipper and consignee. Shipper and consignee. Now, who is a shipper? Shipper is the person who basically, or it is the party shipping the goods. Shipper is the person or a party. Shipper is the party shipping the goods. Shipping the goods. Let's say, for example, ABC Corporation. Did you understand? Shipping. Shipper कौन होता है? Party shipping the goods. ठीक है? And who is a consignee? Who is a consignee? Consignee is the party who is receiving the goods. Okay? Party receiving the goods. Now that can be, let's say, XYZ retailers. Party receiving the goods, XYZ retailers. ठीक है बेटा? All right. So shipper is the party who is shipping the goods, and party receiving the goods is the consignee. The next term is carrier. Who is a carrier? Well, what is the meaning of carrier? Carrier. Carrier is the company which is responsible for transporting the goods. ये कौन सी company है? Company responsible for transporting the goods. Carrier is the company which is, I'm highlighting it with green. Carrier corner is the company which is responsible for transporting the goods. So basically company. So basically it's the company only जो goods को आपको transport करेगी. Am I clear with the term carrier? Okay. So एक बेटा एक पार्टी ने अपने goods भेजने हैं, जिस पार्टी ने अपने goods भेजने हैं ना उसको हम shipper कहते हैं. जिस पार्टी को भेजने, जिसने रिसीव करने, उसको हम कहते हैं कंसाइनी. और जिस कंपनी के पास आप जा रहे हैं कि मेरे गुड्स जो है थ्रू शिपमेंट क्या कर दो, आपने से सपोजिंग आपने चाइना से इंडिया कुछ मंगवाना है, ठीक है ना, तो जो चाइना में कंपनी है जिसके आपने गुड्स खरीदने हैं वो शिपर है, और जो इंडिया में पार्टी रिसीविंग इट दैट्स द कंसाइनी. और जिस कंपनी से कोई भी जो वेसल है जिसके थ्रू जो शिपमेंट होगी, vessel, I'm coming to the next word, vessel, that's called as a carrier. Carrier is the company who's going to transport the goods. Am I clear on these three terms? ठीक है. Then we come to the term vessel. Vessel क्या होता है? Vessel is the ship that is used for carrying the goods. Vessel. Ship used for transportation. Ship used for transportation. Ports of lading. LADING. And discharge. Ports of lading and discharge. So ये जो ports होते हैं जहां पे आप goods को क्या करते हैं, लोड करते हैं, जो लोकेशन है, you know, ports of landing and discharge are what? They are the locations where the ships are loaded. ठीक है. So ये क्या है? Locations where goods are loaded and unloaded.
and unloaded. Locations where goods loaded and unloaded. All right. Now we come to, अब जो सर्विसेज दे रहा है उसको कुछ पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, उसको हम कहते हैं फ्रेट चार्जेस. ठीक है, फ्रेट चार्जेस. आप कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आप देखते हैं ना कि अमेजोन से आपने कुछ मंगवाया, अमेजोन वाला आपको रिसीट देता है, बोलता है ना प्रीपेड है कि अभी पैसा देना है. वी डू दैट वेज ना. अगर हम कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वी लुक इनटू द रिसीट एंड से वेदर इट इज प्रीपेड और इट इज अनपेड. सो सिमिलर जो फ्रेट चार्जेस है ना, दे इंडिकेट वेदर द फ्रेट इज प्रीपेड और इट इज अनपेड. Are you understanding? And the charges are. So they indicate whether the charges are prepaid or unpaid. All right. And freight charges. So they are the money that you're going to pay. Then we come to, I would also share an example. Like I have it on the, मतलब मैं आपको एक image दिखाऊंगी of an example for bill of lading, where you can see what is a bill of lading in case you want to see. Okay, I will show you. Let me just complete this. And finally, I'm just left with date of shipment. ऊपर आपका date लिखा होता है. Date of shipment. ठीक है ना? ये जो date of shipment है, इसमें हम कौन सी date mention करते हैं? जब आपके goods load हो गए. When the goods are loaded. All right. The date when the goods are loaded is the date of shipment. Freight charges are the charges that are being paid, whether they are paid or unpaid. That will be indicated by the receipt of freight charges. And ports are where the goods are loaded or unloaded. And then we have the vessel, that's the ship. Carrier is the company which is responsible for transporting the goods. And we have two parties. One is the shipper and other is the consignee. I hope I'm clear with this. अब bill of lading क्या है बेटा? Bill of lading is an instrument. Why it is an instrument? Now let's understand this concept. Bill of lading क्या है? It is an instrument. Why? Because as per the Indian Stamp Act 1899, bill of lading जो है, it needs to be duly stamped as per the schedule. और जो stamp है, that is levied by the state government based on the value of the goods. अब क्या है बेटा, जब आप शिप में अपने गुड्स को लोड कर रहे हैं ताकि वो डिलीवर हो जाए दूसरी जगह में, तो आपको सरकार को उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द गुड्स. 1 लाख का है आपके गुड्स है, 50,000 के आपने गुड्स है, 2 लाख के आपने गुड्स है, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज करेंगे. जब आप गुड्स एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरी, नॉट सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तभी भी तो हम देते हैं ना, वी पे द टैक्स ना, वी पे द टैक्स. सो बिल ऑफ लैडिंग इज नथिंग बट इट इज सिंपली अ टैक्स ऑन द गुड्स दैट आर डिलीवर्ड बाय वे ऑफ शिपमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो क्या है? सो अब यहाँ बिल ऑफ लैडिंग जो है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. It is an instrument. Why it is an instrument? It is chargeable with stamp duty. With stamp duty. और ये stamp duty कैसे हम levy करेंगे? It will be levied. Stamp duty is levied on the value of the goods. Value of the goods being transported, and it is payable to the government, finally payable to the government. Yes, value of the goods levied on the value of the goods. It is also an instrument. तो अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि बिल ऑफ लैडिंग है क्या, बिल ऑफ लैडिंग इंस्ट्रूमेंट है, एंड वहां पे बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अ रिसीट. बट व्हेन यू रीड सेक्शन 2 सबसेक्शन 4, it says that bill of lading does not include mate receipt. वहां वर्ड यूज किया गया है मेट रिसीट. नाउ व्हाट इज अ मेट रिसीट? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म मेट रिसीट? लेट्स अंडरस्टैंड. सी बेटा, हमारे जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना, शिपिंग इंडस्ट्री में 2 चीजें यूज होती हैं. एक है आपका मेट रिसीट और दूसरा है आपका बिल ऑफ लैडिंग. These are the 2 things that we use in shipping industry. One is the bill of lading and other is the mate receipt.
they are two different documents serving two different purposes. Mate receipt क्या होता है? It is just a preliminary. Okay, it is just a preliminary acknowledgement. Acknowledgement. Preliminary acknowledgement. आप देखो बेटा, लेट मी पहले एक्सप्लेन, फिर मैं लिखूंगी कि क्या है मेट रिसीट. जो शिपर है वो अपने गुड्स जब कैरियर के पास लेकर जाता है ना, शिपिंग कंपनी के पास लेकर जाता है कि मुझे ये वाले गुड्स जो है इसकी शिपमेंट करवानी है एंड दे शुड रीच द कंसाइनी. तो जो वो मेट है जो शिपमेंट करेगा और द ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ दैट शिप, ही विल इश्यू अ प्रिलिमिनरी रिसीट टू हिम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो उसको एक प्रिलिमिनरी रिसीट इशू करेगा, उसको हम कहते हैं मेट रिसीट. उसको हम कहते हैं मेट रिसीट, बट इट इज एन इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट. It is not a document which is an instrument. It is not a document which is creating a right. It is not a document on which you have to pay the stamp duty. It is not a document on which the evidence can be taken. Unlike bill of lading. Bill of lading is a document which can be taken up or which is admissible in evidence. Bill of lading is an instrument which is admissible in evidence. Why? Because you are duly paying the stamp duty and it is now a legal document. Once you pay the stamp duty, it becomes a legal document. So mate receipts kya hai? It is serving as a temporary receipt. It is serving as a temporary receipt of the goods on board. So it is a preliminary acknowledgement. Can I say it's a preliminary acknowledgement? ठीक है? And it is usually this mate receipt is issued at the loading port. It is issued at the loading port. जिस पोर्ट पे आप लोड कर रहे हैं वो आपको जो मेट है या जो ऑफिसर है, he will issue this mate receipt. And it is not a negotiable instrument like a bill of lading. Am I clear on this? All right. Now please let's read section 2 subsection 4. It says bill of lading includes a through bill lading but does not include a mate's receipt. Does not include a mate receipt. मैंने तो इतना डिटेल में करवा दिया, ठीक है? But it is just one line, all right, that you will never forget now. I hope everybody is clear on this. Pre में क्या question आता है? Does not include mate receipt. Does not include. So you've understood all the major key points. Even if you get a small short note, bill of lading पे तो आप लिख सकते हो.